Hello friend, welcome back to my new lecture on collection in .NET Framework. This collection is also very important lecture on this .NET Framework, C#.NET Framework. Basically, collection means the namespace which is having all different data structures. So first of all, I am starting the queue data structure. You know what is the queue and what are the benefit of queue. Queue is a kind of data type data structure where we can insert data on its rear end, and we delete the data from its front. So you can see in this example, we have started the program by the class public class example queue, and public example queue is the constructor of this class. So first of all, we have written here the statement using system.collection. This is the first line, and where we are using this collection namespace. So in C language, always we have to write the long program for data structure, for different data structure, either they are linear data structure or non-linear data structure. But in Java and in JSP and in C#.NET, it is very easy to write the program in data structure. So we have ready-made functions in data structure of data structure in C#.NET. So you can see here the main, after this constructor we have public static void main, integer main, not void main, and string args are its argument, and we have mentioned here queue class. So rather than defining an array type of queue or pointer type of queue, we have directly we are using here queue class. It is already in C#.NET. So queue is the object of this class equals to new queue. So we are writing here in queue. When we will insert the data, when we will add data in queue, then we will write the function in queue. While in C language, to insert the data in queue, we use the rear end and we write the program, the long program we have to write. So it is easier in C#.NET to write the program for queue. So in queue1 and q dot in q2, q dot in q3, q dot in q4 and q dot in q5 means 1 2 3 4 5 are added in queue. तो एक के बाद एक वैल्यू ऐड होती जाएंगी. सबसे पहले 1 आएगा, उसके पीछे 2, फिर 3, फिर 4 एंड 5. तो हम यहाँ पे हमें रेयर और फ्रंट हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो हम सी लैंग्वेज में याद करते थे, और सी लैंग्वेज में बहुत लेंदी मेथड्स होती थी, पर वो हमने मेथड सारी सीख ली है. वो भी ज़रूरी है, बेसिक स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर का वो इम्पोर्टेंट है, पर यहाँ पे .NET फ्रेमवर्क में थोड़ा सा इजी हो जाता है ये सारा प्रोसेस. So the first part of this program to add data on queue. So by using the inQueue function, we can add the data on queue, and when we will access data from queue, then we will use IEnumerator interface. So it has started by I because I represent interface. It means IEnumerator is a interface. So we can directly write the function with it. So q dot get enumerator. So this is the function by which we can accessing the data from queue. So queue is the object of this queue, and q dot get enumerator. So it will access all the data from queue, and its object is IE. So q is a class and get enumerator is a function of q class. तो यहाँ पे q class का object q है, और इसका जो फंक्शन है वो गेट इनोवेटर फंक्शन है. इट विल बी इनसाइड क्यू क्लास, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा क्यू डॉट गेट इनोवेटर. सो गेट इनोवेटर एक्सेस द डेटा, ऑल डेटा फ्रॉम क्यू, एंड we use this IE object, and this is the IE object is the object of IEnumerator interface. So we'll write here IE dot move next. तो यहाँ पे हम while loop में
while loop will execute 5 टाइम बिकॉज आई इन्वोलेटर का ऑब्जेक्ट आई है, इसके अंदर जो वैल्यू आएंगी वो 5 वैल्यूज आ जाएंगी एक साथ, क्योंकि गेट इन्वोलेटर क्या करेगा, एक साथ सारी वैल्यू को ले लेगा, एक्सेस कर लेगा. एंड दिस while loop will execute 5 time, and 5 time it will execute this move next. तो all the 5 time it will return ट्रू. और जैसे 6 टाइम में पहुंचता है, क्योंकि छठी वैल्यू है नहीं इसमें, तो इट विल रिटर्न फॉल्स वैल्यू. एंड ऑन कंसोल राइट लाइन जो करंट वैल्यू है, आई डॉट करंट है, वो एक एक करके वैल्यू को डिस्प्ले कराता रहेगा. इन द फर्स्ट टाइम व्हेन वी हैव वैल्यू 1, then move next will return true, and ie dot move next will return true, और ie dot current will display the value 1 वैल्यू को डिस्प्ले करा देगा. तो ये इस तरह से प्रोग्राम बनेगा. तो वी विल राइट दिस प्रोग्राम इन C#.net, Visual Studio.net, and we can execute the program in Windows as well as in console application. तो जहाँ पे हम बना रहे हैं वहाँ पे हम इसको execute कर सकते हैं. So it is a very simple program, and all data structure having the same pattern. In case of stack, we'll use stack class and we'll define the object of stack class. You can see in the next program. Here we have the object of stack class. So we have written the first statement using system.collection. You must have to write collection namespace in the first line, and then public class stack1. You can write constructor of this class also. So यहाँ पे constructor की जरूरत नहीं है, that's why we have not mentioned here constructor. So we have written the next line public static integer main, and then string args. We can write here void main also. तो यहाँ पे लास्ट में integer main लिखा है, तो यहाँ return 0 लिखा हुआ है. Same way in the previous program we have written here integer main, so at the end we have written here 0 या 1 रिटर्न करना होगा. तो void लिखें तो भी चलेगा इसमें, क्योंकि इसमें जो हम कोई वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं तो उसका कोई बेनिफिट है नहीं. So we have defined here stack. Like in the previous program we have defined the object of q, and in this program we have written the object of stack. Stack object is q equals to new stack. So object may be anything, कुछ भी लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, s लिख सकते हैं. तो we have mentioned here q. So q dot push. However, in the previous program we are writing the function in q function, while in case of inserting data in q we'll write the function in q, and in the another program we will use push function and pop function. You can see here I have highlighted this pop function, I have given in bold character. So push will add the data on stack. Stack is a heap-like structure. Stack is a drum-like structure where we will put the element or item, and the item is added in the form of last in first out. जो सबसे बाद में रखेंगे वो सबसे पहले बाहर निकालेंगे, जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे पहले बाहर निकलेगा. So this is last in LIFO order. We can add the data in order of LIFO, and फर्स्ट इन लास्ट आउट. वी कैन ऑल्सो से इट फर्स्ट इन लास्ट आउट. जो सबसे पहले इन किया गया था वो सबसे बाद में लास्ट में आउट होगा. सो क्यू डॉट पुश 1, क्यू डॉट पुश 2, क्यू डॉट पुश 3, क्यू डॉट पुश 4 एंड क्यू डॉट पुश 5. सो वी कैन add 5 element on stack, and same way in q also we have inserted 5 element. यहाँ दोनों में हमने 5 element किए, different हो सकते हैं. So here we are using in q function, and in case of stack we have push function. So we will use push function, and but the next statement will be same. So q dot get enumerator means we will access all the data from stack by this statement, and enumerator is the interface, and by this enumerator we are accessing all the data, and its object is my enumerator. It's enumerator type, but it is interface. And then we'll use this while statement, while my enum dot move next. Same statement is written in the previous one, while ie dot move next. In case of this program we have written here ie object. वहां पे हमने इनम लिया हुआ है, माई इनम लिया हुआ है, यहाँ पे आई लिया है, बस बाकी स्टेटमेंट सेम है. आई enumerator is the class object, sorry, interface, and get enumerator function will access all the value from q. And in this program we are accessing all the element of
q all the element of stack, and we are storing them my means this is object of, this is the pointer of all the data, and my num dot move next will move to the next element. सो फर्स्ट टाइम इट विल ऑन फर्स्ट एलिमेंट इट विल रिटर्न ट्रू, अगर पहला एलिमेंट है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, एंड विल डिस्प्ले इट बाय दिस स्टेटमेंट कंसोल डॉट राइट माई नम डॉट करेंट। तो ये वैल्यू यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो जीरो है यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ पे हम इस तरह से वैल्यू हम दे देंगे। तो आफ्टर पॉपिंग द हेड ऑफ द स्टैक विल बी रिमूव्ड। ओके, सो यहाँ पे हम अगर हम पॉप करेंगे तो हेड एलिमेंट, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट जो सबसे लास्ट में डिस्प्ले होगा 5। यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ द आउटपुट ऑफ प्रीवियस वन एंड दिस वन। अगर पहले वाले का आउटपुट देखेंगे देन यू विल फाइंड द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इज 1 2 3 4 5। you will find these string in this order 1 2 3 4 5, while in this program you will access the data in reverse order, in descending order. First data will be 5, then 4, then 3, then 2, then 1. So सबसे पहले जो इंसर्ट किया है वो सबसे लास्ट में आएगा, और जो सबसे लास्ट में इंसर्ट किया है वो सबसे पहले प्रिंट होगा। सो आफ्टर पॉपिंग द हेड ऑफ द स्टैक विल बी रिमूव्ड। हेड रिमूव होगा तो हेड सबसे पहले प्रिंट होगा। सो यू कैन राइट हियर पॉप फंक्शन ऑल्सो आई न्यूमरेटर my num, you can write here q dot pop, and you will write this statement I enumerator my enum1, this is my enum and this is my enum1 q dot get enumerator, then you will run same statement, then you see the difference। तो एक में तो हमारा मूव नेक्स्ट, इसमें तो हमारा जो आउटपुट आएगा व्हेन वी विल यूज द पॉप स्टेटमेंट देन वी विल रन इन 5 4 3 2 1, and while in case of this you will display data 1 2 3 4 5। तो इसमें हमको असेंडिंग ऑर्डर पे और इसमें हमको डिसेंडिंग ऑर्डर पे डेटा डिस्प्ले होगा। यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। वी हैव गिवन द बोथ while loop, this while loop as well as this while loop. In this case we are using here q dot pop function। तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें हम पॉप फंक्शन दिया है, जब हम पॉप करते हैं तो वो टॉप से उसको उठाएगा, टॉप वाले एलिमेंट को पहले उठाएगा। तो जब हम गेट एन्यूमरेटर फंक्शन को रन करेंगे देन इट विल पिक द फर्स्ट वन, फर्स्ट टॉप एलिमेंट, देन नेक्स्ट टॉप, देन नेक्स्ट टॉप। तो इस तरह से 1 by 1 उठा करके my num में स्टोर करता है। ये ऑब्जेक्ट होगा, इसका पॉइंटर होगा, और my num डॉट मूव नेक्स्ट करेंगे तो सबसे पहले 5 डिस्प्ले है, 4 3 फिर 2 फिर 1, while in this case it will display accordingly in ascending order। इसमें सबसे पहले 1 2 3 4 इस तरह से हमारी वैल्यू को जिस ऑर्डर में हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस ऑर्डर को डिस्प्ले करेगा। So yeah, this is the difference between queue and stock, and I have explained you the both program. So now see this one more program. This is a little bit complex, and in this program we are using binary search function. You can see here we are using here. I have highlighted it in yellow color. So we are writing here binary search in array. So you know the difference between linear search and binary search, as well as in data structure also. So linear search, in linear search algorithm we are searching the element one by one from first to last, and while in case of the binary search we divide the whole array into two parts, and we search the middle element. Then we find if data is less than the middle, then we'll find the data from the half of the एलिमेंट, जो पहले हाफ है उनमें से हम सेलेक्ट करेंगे इफ लेस देन मिडिल। अगर ग्रेटर देन मिडिल है तो हाफ के बाद के आगे के नंबर में हम उसको सर्च करेंगे। तो अगेन वी विल अप्लाई द सेम प्रोसेस, वी विल फाइंड द हाफ ऑफ द एलिमेंट, जो बचे हुए हैं उनके हाफ निकालेंगे। तो इस तरह से बाइनरी सर्च इज फास्टर देन लीनियर सर्च। सो वी कैन यूज दिस मेथड इन केस ऑफ बाइनरी सर्च। तो हम वहाँ पे एरे का यूज करके हाफ निकाल करके फिर हाफ का हाफ करते थे, फिर उसका हाफ करते थे, फिर उसमें कंपेयर करते थे इज इट लेस देन द हाफ और ग्रेटर देन द हाफ। सो it was the long algorithm, long process. So better than using that process, तो हम डायरेक्टली वी आर यूजिंग हियर बाइनरी सर्च, सीधे सीधे बाइनरी सर्च फंक्शन को रन कराएंगे। सो देन इट विल अप्लाई द सेम प्रोसेस। तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये रेडीमेड फंक्शंस हैं ताकि हम और जगह कंसंट्रेट कर सकें।
तो बेसिक कॉन्सेप्ट यू नो द डाटा स्ट्रक्चर जो हमने सी लैंग्वेज में पढ़ा है वो भी जरूरी है, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ना समझना. सो नाउ सी इन दिस प्रोग्राम वी हैव टू एरे, बेसिकली वी हैव टू एरे यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन. तो आप इसको थोड़ा सा इस प्रोग्राम को ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो इसको समझना आपको पड़ेगा. और you can google this program also. So I have taken it from Google. So public class using array is the class, and inside this class we have two array, integer value and double values. So this is private static integer, private static double. So one array is integer array and second array is double array, and we have initialized the value here in the same class. And we have one more array which is blank, integer value copy. So we'll copy this first array in this array. So now we are starting the program here, public static void main string args, and we are writing here int value copy, means the third array equals to new integer int value length, means its length will be the length of first array int value array. तो जितना int value array की लेंथ है उतनी लेंथ हम इसको देंगे, क्योंकि हम इसको इसमें कॉपी करना चाह रहे हैं प्रोग्राम में. So we have written here message console.write and initial array value. So we will use here print array function. अब ये print array function क्या है? This is user defined array. So this is user defined array, and by this array we will display the value of array. So see this print array in this slide. We have print array function, private static void print array, and we are passing no argument to this array. So we have given this message double value, we have given this message console.write double value, and we are writing again I enumerator e enumerator equals to double dot value dot get enumerator. बिल्कुल वही स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा है कि you can see here I enumerator e enum equals to q dot get enumerator. तो यहाँ पे क्या क्या q, ये स्टैक का ऑब्जेक्ट लिया, डॉट गेट स्टैक की सारी वैल्यू उठा करके हमने my num में स्टोर कर दी है. वैसे ही यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं, वी आर डूइंग द सेम थिंग हियर, वी आर गेटिंग ऑल डबल वैल्यू, है ना, सारी डबल वैल्यू डॉट गेट इन्यूमरेटर, मीन सारी डबल की वैल्यू उठा करके हमने इनम इन्यूमरेटर के अंदर स्टोर कर दी. एंड इन्यूमरेटर डॉट मूव नेक्स्ट और कंसोल डॉट राइट टाइम इन्यूमरेटर डॉट करेंट, और उसके बाद स्पेस दे करके हम सारी वैल्यूज को प्रिंट करेंगे, वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ है. वी हैव रिटन हियर my num dot move next ऐसे लिखा है. तो all the data structure will use their values by this function. तो हम इस फंक्शन के थ्रू जितने भी डेटा स्ट्रक्चर है वहां हम वैल्यूज प्रिंट करेंगे. तो हमने यहाँ पे डबल वैल्यू प्रिंट की. अब हम यहाँ पे इंट वैल्यू, ये दिस इज फॉर डबल वैल्यू, दिस मैसेज फॉर इंट वैल्यू, बिकॉज वी हैव टू एरे, फर्स्ट इज इंट वैल्यू एरे, सेकेंड इज डबल वैल्यू एरे, थर्ड इज इंट वैल्यू कॉपी विच इज इनिशियली ब्लैंक. तो ये ब्लैंक है. तो हम यहाँ पे अब दूसरे पे आते हैं इंट वैल्यू पे. तो अगेन वी हैव रिटन हियर इन्यूमरेटर इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू डॉट गेट इन्यूमरेटर एंड वाइल इन्यूमरेटर डॉट मूव नेक्स्ट ये लिखा एंड इन्यूमरेटर डॉट करंट इसको प्रिंट किया. यानी कि दूसरे एरे की इंट वैल्यू एरे की वैल्यू भी यहाँ पे मूव नेक्स्ट, वाइल मूव नेक्स्ट के थ्रू हमारी प्रिंट होगी. यहाँ भी ये वाइल के थ्रू सारी वैल्यू प्रिंट होगी. एंड थर्ड इज इनिशियल int value copies. int value copy is the third array. This is the third array which is initially blank. इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, तो कुछ नहीं असाइन किया है तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 डिस्प्ले करेगा. तो we'll mention all the statement. तो हमने यहाँ पे for each int element in int value हमने यहाँ पे for each लूप का यूज किया है. यहाँ हमने while लूप का यूज किया है. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, int value copy जो array है उससे हम वैल्यू एलिमेंट पे दे रहे हैं, इंट एलिमेंट इन इंट वैल्यू कॉपी. तो यहाँ से उठा करके एलिमेंट बनेंगे एंड विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ एलिमेंट, एक एक करके वैल्यू प्रिंट करेंगे. यहाँ तो हम ये वाली मेथड करें, इन्यूमरेटर वाली मेथड करें, या हम डायरेक्ट फॉर ईच का यूज करके वी कैन डायरेक्टली प्रिंट इट. सो द थर्ड एरे हैविंग नो वैल्यू सो इट विल डिस्प्ले 0. तो ये जो हमारा है प्रिंट एरे है, ये पहली बार में 0 0 सारी वैल्यू 0 डिस्प्ले करेगा. डबल वैल्यू ये आई, इंट वैल्यू ये आई, एंड int value copy is 0 0 0.
all 0. So this is the function of this print array. So this is the first statement, print array. Now we will write array dot sort, because array is the part of this collection class. So directly we can write array dot sort double value. Now the value of this double value array will be sorted. ये सॉर्ट हो जाएंगी, ये हमारी किस ऑर्डर पे, बाय डिफॉल्ट ऑर्डर, सेंडिंग ऑर्डर होगा उसमें ये सॉर्ट हो जाएंगे. And now we'll copy int value into int value copy. The first array, the value of first array will be copied in the value of second array. तो यहाँ हमारी ये वैल्यू कॉपी हो जाएंगी. तो हमने दो काम किए, दूसरे एरे को सॉर्ट कर लिया, एंड द थर्ड एरे इज फिल्ड बाय द फर्स्ट एरे. तो फर्स्ट एरे की वैल्यू थर्ड एरे में कॉपी की, ये वैल्यू यहाँ फिल हो जाएंगी. एंड नाउ विल राइट array value after sort and copy, and we will again write print array. So this is the last statement, print array. So see this print array function, here we have written the print array function, and again we are printing. So you can see here in this program that we have given here the print array, and again this print array will display the same message. So we are writing here print array again. We have given this print array, and now we have given again print array. So when second time we'll write the print array, then we'll have this array, ये प्रिंट होगा और ये असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होगा, बिकॉज वी हैव रिटन हियर array डॉट सॉर्ट. एंड थर्ड हमने कॉपी कर लिया है, इसको हमने थर्ड एरे में कॉपी कर लिया. नाउ विल हैव दिस वन आल्सो. सो एरे आफ्टर द सॉर्ट, सो विल हैव double array in sorted order, in ascending order, and second int value array in the same order, and int value copy array where we had copied, जो हमने इस वैल्यू को यहाँ पे इसमें कॉपी किया था, वो कॉपी होकर के नाउ इट इज डिस्प्लेड. अब इसमें देखिएगा, अब थोड़ा सा एक स्लाइड और है इसमें, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये. दिस इज द फर्स्ट स्लाइड एंड दिस इज द सेकंड स्लाइड. नाउ वी आर सर्चिंग एलिमेंट. So we are searching 5 in int value array. So you see again, this is int value array, and we have to search 5. 5 is here inside this array. So 5 we have to search. So we are writing here array dot binary search. We can write array dot sort to sort the array, and array dot binary search. For binary search, first we have to arrange the data in ascending or descending order. So we are writing here array dot binary search, and int value is the array, and 5 is the search element which we have to search. So we are searching 5, we are searching the location of 5. So if result is greater than 0, actually the location of 5 is 5. तो ये फिफ्थ पोजिशन पे है 5. So the result will be 5 and it is greater than 0. अगर ये 0 से बड़ा है, यानी कि 5 is फिफ्थ पोजिशन पे है, तो 0 से ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन 0. then we'll write console dot write 5 found add element in int value. तो 5 कहाँ मिला? फिफ्थ पोजिशन पे इंट वैल्यू में, तो ये रिजल्ट में आउटपुट में आ जाएगा. अदरवाइज 5 इज नॉट फाउंड इन इंट वैल्यू. तो 5 फाउंड हुआ है तो इसलिए यहाँ पे शो करेगा 5 इज फाउंड एड एलिमेंट 4 इन इंट वैल्यू. तो ये एलिमेंट 4, इसको हम एलिमेंट 4 कहेंगे. 0 1 2 3 4, हाँ 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये फोर्थ एलिमेंट होगा. तो इट इज फाउंड एट फोर्थ एलिमेंट, फोर्थ नंबर. नाउ सी इन दिस ब्लॉक we are again searching, we are again using array dot binary search int value comma 8763 means we are searching this value from int value array. तो हम ये वैल्यू int value array के अंदर ढूंढ रहे हैं. तो ये वैल्यू तो है ही नहीं, यहाँ तो 5 तक 6 तक है वैल्यू. तो ये 8763 वाली वैल्यू int वैल्यू के अंदर नहीं है. सो इन दिस केस अगर नहीं है तो रिजल्ट इज नॉट ग्रेटर देन 0, क्योंकि कहीं फाउंड ही नहीं किया उसने. तो दिस इज नॉट 0. तो मैसेज क्या आएगा? 8763 फाउंड एलिमेंट एट 0. ये नहीं आएगा मैसेज, क्योंकि नहीं फाउंड कर रहा है, ग्रेटर देन 0 नहीं है. तो क्या आएगा? ये मैसेज आएगा
8763 not found in int value. तो ये you can see the output 8763 not found in int value. तो इस तरह से ये हमारा बाइनरी सर्च, दिस द प्रोग्राम ऑफ बाइनरी सर्च एज वेल एज सॉर्टिंग सॉर्ट फंक्शन. तो हम इसमें सॉर्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं. वी आर यूजिंग कॉपी फंक्शन. दिस इज द पार्ट ऑफ एरे. array dot sort, array dot copy, array dot binary search, and many more array function of array we can use with collection class. So collection class is very important, and it is used for stack, all the stack function, as well as it is used for all the queue function. And in next class I will discuss about linked list and other data structure functions. So till the time, thank you very much.